सो इन लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे विडमैन फ्रेंच लॉ को. सो वी आर गेटिंग सम एरर ऑफ दिस एन स्मॉल m. So actually we got the expression for thermal conductivity as 1 by 3 CV electronic V square tau and conductivity was n e square tau by m. Okay, तो यहाँ पर जो CV है वो पर इलेक्ट्रॉन है. ओके, दिस इज पर इलेक्ट्रॉन बिकॉज फ्लक्स के अंदर हमने ऑलरेडी n को मल्टीप्लाई कर दिया था. ओके, तो जब हमने CV लिखा था तो CV वाज व्हाट dV by dt और E क्या था, E वाज पर पार्टिकल एनर्जी. ओके, बिकॉज जब हमने फ्लक्स लिखा था फ्लक्स में ऑलरेडी n मल्टीप्लाई कर दिया था हमने तो टोटल एनर्जी हो गया था. ओके, बट ये क्या है, E क्या था, पर पार्टिकल एनर्जी था. सो दैट्स व्हाई व्हेन वी डिफरेंशिएट, ओके, वी विल गेट 3/2 kb and when we put these values here, okay, we got the expression with this famous law, with many French law, the ratio of thermal conductivity to electric conductivity and is equal to 1.1 into 10 to the minus 8, which is a Lorentz number. Okay, now इस जो इक्वेशन है इसको डिराइव करने में ड्यूरेंट ने दो मिस्टेक की थी. ओके, आई वाज टॉकिंग लास्ट टाइम कि क्या मिस्टेक थी. तो सबसे पहले तो उसने बोला कि जो स्पेसिफिक हीट है, ओके, दैट इज 3/2 kb. ओके, ही ओवर एस्टिमेटेड द स्पेसिफिक हीट. ओके, एक्चुअली जो यहाँ से जो स्पेसिफिक हीट निकलती है एक्चुअली इट इज 100 टाइम्स. ओके, दिस CV 3/2 kb is actually 100 times the actual value of electronic specific heat. Okay, but fortunately उसका आंसर करेक्ट आ गया. ओके, आंसर करेक्ट क्यों आ गया उसका आंसर, क्योंकि उसने, आप अगर यहाँ पे देखोगे CV, तो उसने क्या किया था, जो V लिया था वेलोसिटी, ओके, थर्मल वेलोसिटी लिया था यहाँ पे. ओके, वो भी वो उसने कम कम एक्सपेक्ट कर लिया था, उसने कम कर दिया था बाय 10 फैक्टर ऑफ 10. ओके, उसने CV को क्या किया था, 100 टाइम ज्यादा मान लिया था एक्चुअल वैल्यू से, और सेम टाइम उसने V को 10 टाइम्स कम मान लिया था. तो उसका जो रेशियो है वो 100 कैंसिल हो गया था. तो फॉर्चुनेटली उसको ये करेक्ट आंसर मिल गया था. ओके, एंड एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली तो दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस वन. अगर वी डू एक्सपेरिमेंटली k by sigma t, okay, that will come 2 to 3 into, okay, 10 raised to power minus 8 watts omega Kelvin square. Okay, this was your Widman. आंसर बोर्ड के बाहर जा रहा था ऊपर वाला. हाँ, वो थोड़ा इसका डबल है बस. that is equal to 2 into 2 to 3. okay, exponential value 2 to 3, 3 it's 2, 2 minus 3 2 to 3, 10 raised to power minus 8, that is experimental values. Okay, so this was your Widman French law. Okay, सर, हाँ तो बोलिए. इसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से तो डिफरेंट आ रहा है. हाँ, तो इतना फैक्टर अब एक्यूरेटली थोड़ी एक्सप्लेन कर पाता है. ठीक है, ओके सर. ठीक है, कांस्टेंट उसने कांस्टेंट बता दिया, वही एक अच्छी चीज है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हॉल इफेक्ट. वी हैव डिस्कस्ड कि विद ड्यूरेंट लॉ हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. हमने देखा कि हम विडमैन फ्रेंच लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब हम क्या देखेंगे कि हम हॉल इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, और उससे पहले हम एक इक्वेशन और देखेंगे, क्योंकि हमने देखा कि सिग्मा क्या है, सिग्मा इज NE स्क्वायर टॉ बाय m. ओके, ये हमको ड्यूरेंट मॉडल से मिला. ओके, ड्यूरेंट मॉडल से हमको एक और इक्वेशन मिलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. ओके, दैट इज पुट द हेडिंग जनरल इक्वेशन of motion for electron in field. इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इन फील्ड. ओके, कोई भी फील्ड होगा, किसी भी फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो उसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, वो भी इस थ्योरी का एक सेंट्रल पार्ट है. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक मेटल है, मेटल कोर है, दिस इज मेटल ions. Okay, now these are positive charge. Okay, now what is happening, my electron is while traveling
is colliding with this or getting scattered with these ions. Okay, so it will get scattered, it will go here, it will go here, okay, it will go here and come, it will go here. So the time period, okay, between two collision, we told it is tau. Okay, so tau is what? Relaxation time. Relaxation time or collision time. Okay, the time interval between two collision. Okay, now suppose I am applying, this is now suppose I'm applying electric field. Okay, now suppose I'm applying electric field, so what will happen? So it has some suppose this particle has some momentum, यहाँ से collide हुआ, उसके बाद इसी किसी point पे उसका momentum है. Okay, it has some momentum pt some particular time. Okay, let pt average this is average for all electron. Okay, so pt is the momentum of electron at time t. Okay, now we are applying fields. Okay, field apply कर रहे हैं dt time के लिए. Okay, dt interval के लिए. Now हमको पता है कि हमारा जो रिएक्शन टाइम है, collision between two time है, that is tau. Okay, so if I take ratio dt by tau, ये क्या बताएगा? If I take dt by tau, dt is a small interval, okay, which may be equal to tau or less than equal to tau. So in case of dt by tau क्या बताता है? Probability of collision. Probability. Yes. This shows the probability of collision. Okay, कि इस टाइम पीरियड में collision होगा कि नहीं होगा. अगर dt equal to t है, अगर dt equal to tau है, तो tau by tau 1 हो गया. ओके, collision होगा ही होगा. ओके, भी हर इलेक्ट्रॉन क्या है, tau टाइम के बाद भी collision करता है. तो अगर उससे इसको छोटा इंटरवल में dt ले ले, तो उसमें collision की प्रोबेबिलिटी क्या है, dt by tau. ओके, अगर dt बहुत बड़ा है, tau के बराबर है, तो collision तो होके रहेगा. ओके, so now this is dt by tau. Okay, this is the probability of collision. Okay, so dt by tau is probability of collision. Probability of collision. Okay, and 1 minus dt by tau is what? वन माइनस dt by tau क्या है? collision ना करने की probability. Okay, मतलब collision की probability of that it will not strike. Okay, collision ना होने की probability है. Correct? Okay, now अगर मैं जो field लगा रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन comes here, it collides this ion, again this collide with ion. So in collision it loses momentum. Okay, that means ये अपनी previous memory को भूल जाता है कि पहले memory क्या थी, अगर collision हो जाएगी तो. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अगर आप हम फील्ड लगा रहे हैं किसी टाइम t पर, तो क्या होगा? सर, हाँ सर मैं इसका क्वेश्चन सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि जैसे रिलैक्सेशन टाइम कोलिजन बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब एक एटम दूसरे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से कितना टाइम में कोलाइड कर रहे हैं, उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं. तो सर ये कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट है ना, ये तो एवरेज टाइम लेते हैं ना, एवरेज टाइम लेते हैं कि कोई पहले टकरा जा रहा है, कोई बाद में टकरा जा रहा है, इन सबका एवरेज टाइम होता है कोलिजन टाइम. दो कोलिजन में इतने एक इलेक्ट्रॉन कितना मूव करता है, इसको ये एवरेज टाइम है, रिलेशन टाइम. एवरेज है. ओके सर, ठीक है. अब अगर मैं, और ये भी बात सही, दिस फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट ये कि इलेक्ट्रॉन के पास कोई मेमोरी नहीं होती है, कोलिजन करने के बाद में उसके बाद कोई मेमोरी नहीं रहती है. तो व्हेन आई एम अप्लाइंग फील्ड, ओके, सो एट टाइम t, so after time dt, what will be the momentum? pt dt. So only those electron will get those electron, उसी इलेक्ट्रॉन का momentum enhance होगा. ओके, जो collision नहीं कर रहे हैं. ओके, so this is the probability of having no collision, tau. Okay, and then this is your pt at time t. I suppose that your force is what, ft is equal to dp upon dt, dp upon dt. Okay, तो change in momentum क्या होगा, dp ft dt. So I can write here ft dt. Okay, so here I am taking only
those electron, ये मिट रहा है ना, कट रहा है ना, so I am taking only those electron which will not have any collision, so उनका मोमेंटम t प्लस डेल्टा टी टाइम dt टाइम पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी क्या था 1 माइनस dt टॉ, ओके, पहले था उनका pt एटन t पे, अब फील्ड लगाने से उनका मोमेंटम बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, dp ft dt, ओके। अब नाउ अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सर ये इक्वेशन एक बार फिर से बता देते सर। भाई अब मैं किसी का मोमेंटम पीटी है, अब उसमें फोर्स लगा रहा हूँ, उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, यस सर, चेंज होगा। ये कितना चेंज होगा, एफटीडीटी यस सर। चेंज हो गया, ठीक है। यस सर। पर मैं अब लेकिन वही इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहा हूँ जिनके कोलिजन की प्रोबेबिलिटी नहीं है, कि कोलाइड हो गया ओके तो, सर। तो उनकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, वापस वो प्रीवियस उनको उनके इसमें एनहांसमेंट नहीं होगा, क्योंकि तो जैसे कोलिजन हो जाएगा इस पीरियड में, वो यस इलेक्ट्रॉन सर। वो तो अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे ना वापस, ओके। अच्छा अच्छा, ओके सर। अभी नाउ इट इज dt, if I take dt is very small, dt is सर very व्हाई यू small, हैव टेकन pt प्लस dt where लेफ्ट हैंड साइड? pt, लेफ्ट हैंड साइड, तो यस सर। t टाइम पे मोमेंटम pt है, तो t प्लस डेल्टा t पे कितना होगा, p प्लस डेल्टा t होगा, ओ, उसमें जो नॉन कोलिजन कर रहा है उसका भी क्या फोर्स मोमेंटम? लगाया ना ओके हमने, एक फोर्स लगाया dt टाइम के लिए, यस सर। तो मोमेंटम क्या होगा इस टाइम पे, वो निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके ओके सर, ओके सर। सो नाउ इफ दिस dt इज वेरी स्मॉल, अगर dt बहुत स्मॉल है तो ऑलमोस्ट दिस इज 1, ओके, तो हम लोग ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ओके, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, ऑलमोस्ट वी काउंटिंग ऑल द प्रोबेबिलिटीज, ओके। सो नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ मोशन, okay, so I want to calculate equation of motion, okay, so I want to calculate pt plus dt minus pt upon dt limit dt tends to 0, कितना आएगा कैलकुलेट करो, ओके। सो आई वांट pt plus dt minus pt, ओके, सो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो इफ आई सॉल्व दिस वन, दिस विल गिव मी व्हाट, pt minus ft dt, okay, and then 1 minus pt minus pt minus ft dt, okay, then if you multiply this one, this term, this will give you dt tau pt, okay, and this minus ft, and this will dt square, okay, so I'll get a terms of, okay, terms of dt square, which is negligible, okay, so I will neglect these terms, dt square terms, because dt is very small, so I will get ft plus dt सर equals to, pt प्लस ft होगा ना सर? कौन सा, ये पहला वन से हाँ, तो ओके, सो pt प्लस ft dt, ओके, माइनस pt dt tau, और dt से अब dt से डिवाइड करना है, so if you divide by dt, okay, so if you divide by dt, okay, so this will become now ft, okay, pt cancel हो जाएगा, ft, and this you get pt, okay, upon tau, okay, so and this is equal to what, this is equal to dp by dt, so dp by dt is equal to ft minus pt by tau, okay, so this is the central equation here, these are average terms, okay, these are momentum, okay, and average terms, okay, so they say these are, so this is the equation of motion, okay, this is the equation of motion of electron, okay, and this is very important equation, okay, this is a result of this your Dund model, and this is going to help us to derive many properties of metals, okay. So there are two important expression, or two important key in the Dund model. One is sigma n is equal to tau by m, and second is dp upon dp by dt, that is the force equation in field, dp by dt ft minus pt upon tau, okay, ये equation आपको याद रखना है, okay. Now we'll derive this your Hall effect. यहाँ तक क्लियर है, आगे चले। सर अभी रब मत करना सर। Now put the heading Hall effect. तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हॉल इफेक्ट निकालेंगे, जैसे एज यूजुअल हम निकालते हैं, ओके, उसके बाद इस इक्वेशन को यूज करके हॉल इफेक्ट निकालेंगे, ओके। सो पुट द हेडिंग हॉल इफेक्ट,
सर हाँ, ये लिमिट को ft माइनस पीटी बाई टाउ कैसे लिख दिया सर? किसको? ये लिमिट इक्वल्स टू ft माइनस पीटी बाई टाउ। ये तो dy by dx नहीं होता है क्या? यस सर, ये तो समझ गया, राइट हैंड साइड। ये ft है ना, यस सर। तो dt तो कैंसिल हो गया ना यहाँ से। ये हायर ऑर्डर का टर्म छोड़ दिया हमने। यस सर, छोड़ दिया। हाँ, और ये pt कैंसिल हो गया, pt माइनस करते ही। ओ ओके ठीक है, ओके सर। pt माइनस किया, pt को उधर ले जाओ। ओके, यस सर। ये pt प्लस क्या है, dt है ना। इसको यस इसको इधर सर। इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, फिर dt से डिवाइड कर दो, तो ये ओके pt ओके सर। pt बाय टॉप बच ओके सर। जाएगा। ओके, ओके सर। सो नाउ पुट द हेडिंग हॉल इफेक्ट। अब बताओ हॉल इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज हॉल किसी इफेक्ट? डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से उसके अलावा वोल्टेज जनरेट होता है, उस वोल्टेज का हॉल वोल्टेज बोलते हैं, और इस इफेक्ट को हॉल इफेक्ट बोलते हैं। Okay, so now Hall effect is very important experiment in solid state physics. Okay, so suppose I have a sample, okay, a rectangular sample. Okay, so say this is my sample. Okay, सर सैंपल मींस मेटल होगा ये। metallic sample. Okay, ओके सर। so I have this metallic sample. Okay, say इसका लेंथ जो है मेरे पास L है, लेंथ इज L. Okay, इसका जो ब्रेड्थ है that is say this is B, और इसका जो थिकनेस है से थिकनेस इज W. ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अप्लाइंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, आई एम अप्लाइंग वोल्टेज अक्रॉस दिस वन, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. ओके, सपोज यू कैन सी इन वन डायमेंशन, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज माय सैंपल. ओके, एंड आई एम अप्लाइंग व्हाट, आई एम अप्लाइंग वोल्टेज. ओके, सो इफ आई एम अप्लाइंग वोल्टेज, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ओके, नाउ सपोज आई एम अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड आल्सो. ओके, इन जेड डायरेक्शन, अगर मैं इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ. ओके, 0 0 B. ओके, दैट मींस योर bx is 0. Okay, by is 0, and your bz is B. Okay, so you know B is a vector, iota bx plus j by plus k bz. Okay, now suppose this is my x direction. Okay, and this is my z direction, and say this is my y direction. Okay, so what will happen when you apply electric field? Okay, so there are electrons in the metal. Okay, so say this is electron. Now this electron will move. Okay, so electron कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? If I'm applying field इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस -x में. Okay, so this electron will move now in this -x direction. Okay, so now here is यहाँ पर एक constant magnetic field भी है. Okay, so when electron will move in magnetic field, okay, so magnetic field में फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? Lorentz Mv. force. Lorentz Okay, magnetic Lorentz force. so V cross B. Okay, so charge is -e. Okay, V क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, वो कौन सी डायरेक्शन में है? -x. -x. ओके, सेम -x. ओके, vx -x, और b क्या है? z जेड डायरेक्शन. डायरेक्शन में। Okay, so the k bz. Okay, so now if I solve this one, okay, तो मेरे पास क्या आएगा? I into k. k क्या होता है? So this minus minus plus. Okay, vx bz I into k. So this will come I vx bz. This become what? I into k minus y माइनस जे। minus j. Okay, so this is my plus j, and this is my minus j. Now electron will feel force. Okay, all the electron they are moving in the sample. Okay, they will feel force towards the minus y direction. तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस फोर्स के कारण मूव करेंगे. तो व्हाट विल हैपन, जो आमने सामने के जो सरफेस है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी. ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और यहाँ पे इस सरफेस पे आके क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरा सैंपल है, दिस इज माय सैंपल, रेक्टेंगल सैंपल. ओके, नाउ इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम अप्लाइंग करंट फील्ड. जो करंट फ्लो कर रहा है, आई एम अप्लाइंग ए मैग्नेटिक फील्ड. ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा? इफ दिस इज वाई डायरेक्शन टुवर्ड्स यू,
what will happen? It is minus y direction. So what will happen? Because of this magnetic field in this surface, okay, there will be deficiency of electrons. और इस surface में क्या हो जाएगा? There will be excess of electrons. Okay, so because of this excess of electron, okay, what will happen? There an electric field will generate, whose direction is what? EY. This EY is called Hall voltage, Hall electric field. Okay, Hall electric field, or you can say EH. Okay, EY, or you can write EH also. Okay, now because of this electric field also, this electric field in this direction, there will be force. Force कहाँ होगा? That is in y direction. Okay, so you have electric field. Okay, now because of magnetic field, so it is moving in this direction. Magnetic field is applying force in minus j direction, and this field, okay, what will do this field? This will balance this magnetic force. Okay, so this is your force whose value is what? I'm only writing magnitude. Okay, E y. Okay, and this is what? E vy or vx. Sorry, this is vx E vx and bz. Okay, now this movement will not be continue always. Okay, in equilibrium, what will happen? This your field. Okay, this force. Okay, this electric force Ey will balance your magnetic force. Magnetic force is what? E vx bz. Okay, so ये cancel हो गया. Ey equal to vx bz. Okay, now जो भी यहाँ पे होल वोल्टेज आता है, okay, this whole voltage, okay, you can write EH also if you want. Okay, so this EH hall voltage is always proportional to क्या? एक तो यहाँ से पता चल रहा है ना, एक तो VS के proportional है और किससे proportional है? BZ के magnetic field के. So Vx is proportional to what? Vx is proportional to current. How much current is flowing? So your whole voltage that depends on this is proportional to Jx and Bz. Okay, so if I remove this proportional constant, this will give me what? EH equals to hall voltage Jx Bz. Okay, so your hall voltage will be what? Hall voltage, Hall coefficient. So RH is the Hall coefficient. That will be equal to what? EH, okay, or E by Jx Bz. Okay, so where RH is what? Hall coefficient. Now I want to measure this Hall coefficient. Okay, so कैसे measure करेंगे इसको Hall coefficient को? सर हाँ इसमें सर EY जो है जब चार्ज एक्यूमुलेट हो गया प्लस और माइनस, हाँ उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, वो हाँ, EY है ना? यस यस. अगर उसी यहाँ को फिर अगर EH अगर आपने लिख दिया. EH को EY को EH लिख दिया ना मैंने. आप हॉल Yes, EY sir, बोलो yeah. या हॉल EH हॉल सुनने में थोड़ा कंफर्टेबल लगता है क्योंकि हॉल वोल्टेज है. और यहाँ पे आप वोल्ट मीटर लगाओगे. ओके, Yes, sir. सपोज इन दो पॉइंट पे मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो यहाँ वोल्टेज डिफरेंस आएगा. ओके, ओके सर. पर वो सारे जो पॉइंट्स है वो एक ही प्लेन में होने चाहिए. ऐसा नहीं कि ऐसा 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 इस तरीके से हो. इस तरीके से Okay, आएगा sir. तो फिर ऑलरेडी वो तो वोल्टेज डिफरेंस आएगा ही आएगा दो पॉइंट में. तो भी आप यहाँ पे वोल्टेज एक्स में वोल्टेज लगा रहे हो, एक पॉइंट आपका यहाँ पर, एक पॉइंट आपके यहाँ पर है, तो बच्चे के लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कॉन्टेक्ट सही नहीं होते हैं तो अपने आप ही वोल्टेज आएगा उसमें. तो ये इसका वोल्टेज, इस पॉइंट का वोल्टेज अलग अलग ही है ना. Yes, sir. Yes, वो तो sir. एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है. तो ये जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ दिस पॉइंट शुड बी पैरेलल, एक ही रो पे Same होनी चाहिए. plane. हाँ, सेम प्लेन पे. तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लगाने से पहले आपको इनका वोल्टेज चेक करना पड़ता है. ये शुड बी जीरो. ओके, if this points if the potential between this point is not zero, then that is the error, and that error you have to subtract in your final answer. Okay, so Okay, first sir. of all, और सर ये JX फिर कैसा लिख दिया सर? कौन सा? ये हाँ, तो अभी कर रहे हैं ना. VX. तो अभी क्या, your EH is your equal to VX BZ. Okay, Yes, sir. so I understand here my EH is proportional to what? JX, because JX is what? JX is equal to minus JX का क्या होता है? JX is what? Minus NEVX. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Okay, sir. so यहाँ से I am telling that your Hall voltage, okay, that is proportional to your current density and your BZ. Okay, now I want to calculate what is the value of Hall coefficient. Okay, so ये पॉइंट क्लियर है ना. मैंने जो बोला, whenever you doing measurement and experiment, okay, first you have to make this voltage null.
Okay, then after that only you have to apply magnetic field. Then only what voltage you get, that will be actually your whole voltage. Okay, so now I want to calculate this RH. Yes, sir. So RH is what? RH is your EH. Okay, EH, JX and BZ. Okay, and EH is what? EH is your VX, BZ. VX, BZ, and JX is what? JX is minus NE VX. Okay, हमने देखा था ना ड्यून मॉडल में J क्या होता है? NE VT होता है. Okay, so this is BZ. So BZ कैंसिल हो गया, VX कैंसिल हो गया. So RH क्या आ गया आपका? -1 by NE. And you know this is the well-known result. RH equal to minus NE. Okay, so that means if you can measure experimentally, okay, this whole voltage, if you know this current density, what you're applying in the sample, okay, you know magnetic field value, okay, and if you can measure whole voltage, now you can do two ways. Okay, either you have to fix this JX, current को fix करना है, voltage को fix करना है, voltage को fix किया तो electric field fix हो गया, current fix हो गया, and then you can vary the B. When you vary B, your voltage, this E will be vary. Okay, similarly you can make B constant and you can vary this current, and then you can measure EY. Okay, by measuring this constant you can calculate Hall coefficient in your laboratory. Okay, and this RH, what the knowledge of this RH, once you know the RH, the magnitude of RH will tell you the concentration of charge carriers in your sample. Okay, and sign will tell you whether these particles are your electron, okay, or these are holes. Okay, so by measuring Hall effect, all of you know, you can measure the concentration of charge carriers in the sample. Okay, and you can also measure the sign of the charge carriers कि इसके अंदर जो charge carriers है ये p type semiconductor है कि अभी this one I'm metal. Okay, so this is a charge carriers are electron or charge carriers are holes. Okay, so for some metals we can accurately calculate this the concentration of charge carriers. Okay, but this relation is not always true. Okay, सभी metal के लिए सही नहीं होता है, because some metals give positive value of Hall coefficient. Okay, उसको कैसे explain करोगे? And if you even you take semiconductor, this n is not constant. Okay, this is a function of time, but because of this gives some of metals it gives correct value, so that's why this expression is well celebrated. Okay, in reality Hall coefficient measure करना, okay, sign पता करना, that is very difficult job. You can measure the concentration of charge carriers of any sample. Okay, but measuring the sign of charge carriers कि n type है कि p type है, that is very difficult job. Okay, there are very few techniques where you can measure कि charge carriers electron है कि hole है. Okay, there are some samples will show oscillate, they will show sometimes n type behavior, sometimes they will show p type behavior. Okay, also, so now so this is your Hall coefficient. सर तो ये बस कॉन्सेंट्रेट, इसका मतलब एप्लीकेशन ये है कि कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए चार्ज कैरियर्स पता करने के लिए किसमें इलेक्ट्रॉन है कि होल है, और कंसंट्रेशन ऑफ ये क्वेश्चन सेमी मेटल्स पे लागू होती है डोंट गो अप टू सेमी मेटल अभी. ठीक है, अभी जैसे हम वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स. ओके, अब वहीं पे फोकस रहो. ओके, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग्स. ओके, सो नाउ दिस इज योर Hall voltage, this Hall electric field. Okay, now I can do this measurement in terms of Hall voltage also. Okay, this formula sometimes they ask questions exam. So if you want to write Hall voltage, तो Hall voltage क्या होगा? Hall voltage कितना होगा? सर H into EH. B इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? माइनस dV by dx नहीं होता है क्या? ओके, अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो dV by dx V चाहिए तो तो E W नहीं ये लेंथ सर H into EH. यस सर, H into EH. ये इसको B बोलो, H बोलो, जो भी बोलो, मैंने B बोला है, B into EH. यस सर, तुम इसको H भी बोल सकते हो. ओके, so this is the formula. Okay, so now you can write the value of your EH, okay, in this expression. So B EH is what? अभी हमने कैलकुलेट किया ना EH. Okay, so VX BZ. हाँ, so you can put the VX BZ, whatever values you can put here in terms of Hall coefficient. In terms of Hall coefficient I'm saying. Okay, so this is B. Okay, Hall coefficient in terms of Hall coefficient is RH. Okay, JX and BZ. Okay, now B RH, JX is what? JX is current density, IX by A, BZ. Okay,
बीजेड लिखो या बी लिखो, क्योंकि मैं तो बी बोल दिया है, यू कैन राइट बीजेड आल्सो, नो इशू, ओके। सो इफ यू राइट बीजेड हियर, ओके, सो नाउ दिस इज बी आर एच, ओके, आई एक्स ए, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये वाला, ये और ये, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, into W. ओके, सो बी इंटू डब्ल्यू, बी इंटू डब्ल्यू बी जेड, ओके, सो बी से बी कैंसिल हो गया, okay, so now if you want your Hall coefficient in terms of Hall voltage, so your Hall coefficient will be what, W, your VH W, okay, upon IX BZ, okay, so ये फॉर्मूले भी याद रख लो, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। So this is सर the, मेरा एक छोटा सा डाउट है सर, VH equals to B into EH कैसा हो गया सर? कौन सा, So first line VH equals to B into EH, ये वाला, के ऊपर वाला। अरे भाई आप अगर वी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, वी इक्वल टू ईडी नहीं होता है क्या, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, निकालना है sir. तो वी बाई डी नहीं लिखते हो, तो ओके सर, तो ओके ये सर। फील्ड है यहाँ पर, ये फील्ड है ई एच, और इनके बीच में डिस्टेंस sir, क्या है, yes, दोनों दोनों सरफेस के डिस्टेंस क्या है, बी, BB, ओके सर, ओके सर। ठीक है। So this is your Hall effect. Now this same Hall effect I want to derive by the equation what we use, we have just derived sometime before, okay, so using that equation also we can derive your Hall effect and magnetoresistance, okay. So what is Hall effect and magnetoresistance, okay, so Hall effect and magnetoresistance. So just now I have written the equation of force, okay, that was dp, okay, dp upon dt, okay, that was what, ft minus p by tau. This was my equation of motion of electron, okay. Now here force is what, in the case of Hall effect, what is the force? Force is what, electromagnetic, this is the Lorentz force, दो तरह force है, okay, you have QE plus V cross V, you have Lorentz force, okay. Q is what, Q is minus charge electron in the case of metal, this is my force, okay. Now put the values here, okay, so you put the values here, this become dp upon dt, okay, minus e plus v cross b, okay, minus p, p क्या है, मोमेंटम है by tau, okay. Now यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, we are not applying AC field, we are applying only DC, okay. So when we are applying DC, so after some time there will be steady state, so your dp by dt should be 0, okay. So put your dp by dt is equal to 0, so dp by, so in steady state, okay, अगर AC लगाओगे तो आपका मोमेंटम चेंज होता रहेगा, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, बट DC देन जैसे लगाओगे you this they will move with constant velocity, so force will become 0, momentum, this dp by dt will be 0, okay, acceleration 0, okay. So now what will happen, steady state you can write 0, okay, minus e plus v cross b, okay, minus p by tau, okay. Now हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, these are all vectors, okay. Now if I write in the form component I and j, okay, separately they should be 0, correct, है कि नहीं? Yes, sir. So write x component and x component and y component, write separately and see what happens. So if you see, this is, so I am writing for component form, this is minus e, okay. So say this is IEX, भी IEX तो हमने लगाया था, JEY प्रोड्यूस हो गया था, okay. When you applied electric field, we are applying, तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हो गया था, यस सर, यस सर। ठीक है, Z में तो 0 ही था, Z में था ही नहीं, okay, इलेक्ट्रिक फील्ड, okay. Similarly now my electron earlier moving in x direction, minus x direction, जैसे मैंने फील्ड लगाया वो कहाँ घूम गया, y में घूम गया, ठीक है, जेड में घूमेगा, वाई में घूम गया, इसके जो इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, ओके. सो नाउ सो आई हैव टू कंपोनेंट, वन है IVX, ओके, प्लस JBY, एंड B is only what, B is only Z direction,
So this is only k bz. Okay, and this is my momentum, which again can be, sorry, लिखने में नहीं आ रहा इसमें. सर हाँ, ई तो ओनली एक्स डायरेक्शन पे था. y में भी हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होता. Okay, so E, I'm writing again. Okay, E plus V cross B. Okay, minus P by tau. Okay, so I'm writing in component form. This will be 0 minus E iota EX plus J EY. Okay, plus iota VX plus J VY. Okay, into K BZ into K BZ, okay, minus iota Px plus minus J Py upon tau. Okay, now separately x component and y component को अलग करो, अलग लिखो. Okay, so सर p मोमेंटम है ना सर. हाँ, p momentum x direction में y direction में. Okay, so I'm writing now x component. Okay, so I'm writing x component. X component क्या होगा यहाँ से? I'll get minus E. Okay, so I'll get minus ex, x component ex आएगा. Okay, then यहाँ से x component क्या आएगा? b y into k. Y into k is I. Okay, so vy. So I'll get what? Minus e vy bz. Okay, and x component here I'll get what? Px upon tau. Okay, this is my equation number 1. Okay, similarly if I want to write y component, okay, so y component क्या आएगा? minus e ey. Okay, and I want y component. Okay, y component कैसा आएगा? x into y. सर X into इसमें x. vx into pz होगा ना सर. x कंपोनेंट आप लिख रहे हैं ना, हाँ, तो माइनस e into ex अरे माइनस x component कैसा, x component कैसा आएगा? j into k तो आपका i आएगा. यस सर. ये i into k तो आपका क्या आएगा? माइनस j. यस सर. वो तो माइनस j कंपोनेंट हो गया ना. i कंपोनेंट तो क्या होगा आपका? j into k आएगा जो. ओके, माइनस vy ओके bz. ओके ओके, सर. now you want your this component. Okay, y component. So y component come I into k minus. Okay, it has become plus e v vx bz. Okay, and minus py by tau. Okay, this is equation number 2. Now we know. इसको सॉल्व करो, इसको आगे सॉल्व करो अभी. Now इसको मिटा दो क्या? So now No, you can, sir. so now you can write what? You can write your ex, okay, equals to ex equals to what? Minus ey bz minus px by tau. Okay, now if you multiply this equation by any by any tau by m, multiply. I want to make conductivity formula. Okay, multiply this equation by any tau by m. Okay, so if you multiply by any tau by m, what will happen? This become your any square tau upon m ex. Okay, now if you multiply any square, so you become n. Okay, e square by minus bz. Okay, by m, and this equation become what? N e tau upon tau px. Okay, by m. Tau cancel. सर px को भी ओपन कर दें. हाँ, px को ओपन कर दो. So what will happen now? This become what? Conductivity. ये क्या है? n इसका tau by क्या है? Conductivity है. This is conductivity when there is no magnetic field. Sigma 0. Okay. यहाँ पे क्या है मेरे पास? n e y है. n e y. Okay. n e y, and then also have e b m. Okay, I have e b z upon m. Okay, so उसके बाद क्या बच जाएगा? tau बच जाएगा क्या? any tau और बचेगा. यहाँ tau भी था ना, taus. Okay, taus, and here we have n e px upon m. Okay, px upon m क्या लिख सकते हैं? velocity, or you can write m, or you simply can write any px को हम क्या लिख सकते हैं? So any px is हमारा this is vx. Okay, vx. So now what I can, रो नॉट इस पूरे को आपने माना है.
N square tau by m. किसको? हाँ Rho. हाँ, ये रो नॉट है ना, कनेक्टिविटी Okay, है ना. sir. So now if you write again this, so you know. सर आई थिंक पहला टर्म वो होगा पॉजिटिव होगा। हाँ, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा JX, ये क्या हो जाएगा JY माइनस JY क्या होता है माइनस NE/VY, ये हो जाएगा JY. ओके, एंड सिमिलरली ये क्या हो जाएगा आपको JY, उसके बाद में EB/m, EB/m, राइट. दिस इज ओमेगा C और ओमेगा नॉट ऑन tau, so say omega C, say this is your tau. Okay, and here what your NEVX, that is your what JX. So this is your first equation, equation number 3rd. Okay, similarly if you try to write for Y, okay, if you write for Y, you'll get what sigma naught EY, okay, minus omega C और omega naught बोल देता हूँ मैं ना, omega naught, omega C बाद यूज करेंगे. So omega, so minus omega naught tau JX, या JX आ जाएगा JX. Okay, and you'll get यहाँ पे JX है तो यहाँ पे JY आ जाएगा. Okay, so this is your equation. Okay, now इसमें कौन सी टर्म जीरो होनी चाहिए बताओ इस इक्वेशन में? इन 3-4 इक्वेशन में कौन सी टर्म जीरो होनी चाहिए? उसको अच्छे से देखो. भी यहाँ पर EX है, EY है, हमारे पास JY sir. JY है. वेरी वेरी गुड. क्योंकि स्टडी स्टेट में क्या है, एक बार सेपरेशन, चार्ज का सेपरेशन हो गया, एक बार यहाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज का सेपरेशन हो गया, फिर थोड़ी मूव करेंगे. Yes sir. स्टडी स्टेट में थोड़ी चार्ज वाई डायरेक्शन में करंट तो है ही नहीं, तो JY शुड बी जीरो. ओके, तो सेट JY, सेटिंग JY इक्वल्स टू 0. So when you set JY equals to 0, okay, here you can calculate what is the value of EY. Okay, so set JY equals to 0, this will give you EY. Okay, जिसको मैंने पहले EH बोला था, EY will be equal to what? Minus omega naught tau JX, okay, upon sigma naught. Okay, ऊपर जा रहा है sir blackboard के. ऊपर जा रहा है. So now if you write EH, okay, so EH or EY from this equation, you're putting JY 0, okay, it will be minus omega naught tau JX, okay, upon sigma naught. And you know what is sigma naught? Sigma naught is your NE square tau upon M. Okay, and your JX is what? JX is your minus NEVX. Okay, जो भी डुरंट ने फॉर्मूला दिया वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम इसको. ठीक है, पुट दिस वैल्यू हियर एंड सी व्हाट इज द होल कोएफिशिएंट इज कमिंग. सो सर एक मिनट सर. So now put the formula for your, इसको मिटा दो ना. सर आप लास्ट लाइन पर अपने क्या सर बोला यहाँ पे ये वाला कहाँ पे? हाँ सर, यहाँ पे JY करंट JY 0 कर दिया. उसके बाद सर, उसके बाद में यहाँ से EY की वैल्यू आ गया. EY की वैल्यू कितना आ गया? माइनस ओमेगा नॉट tau JX अपॉन सिग्मा नॉट नीचे आ गया EY. ओके. Now I know what is my EY और EH मेरा क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, थोड़ी देर बताया था मैंने. They are proportional to what? They are proportional to EY is proportional RH and JX and BZ. Okay. Yes sir. Okay. Yes sir. RX JS भी. Okay. और इसमें सर EH आ रहा है ओमेगा नॉट टाउ VX M अपॉन E. हाँ, कहाँ पे? ये EH इस वैल्यूज पुट करने के बाद, वैल्यूज पुट करने के बाद. हाँ, दोनों को बराबर कर दो ना. अभी इन दोनों को बराबर कर दो. ओके, ओके सर. तो उनको बराबर कर दो. तो हमको तो हॉल वोल्टेज चाहिए, हॉल कोएफिशिएंट चाहिए ना. ओके, सो दिस RH will be what? RH will be what? Your minus omega naught tau JX sigma naught. Okay, JX BZ cancel. Okay, now minus V naught is EB upon M tau. Okay,
sigma is your ne square tau upon m, okay, and this is your b, bz और b बोल लो, okay, tau cancel, bz cancel, m cancel, e cancel, okay, so what you left, minus 1 by ne, okay, so this is your हॉल कोफिशिएंट, तो हमने इससे भी निकाल दिया, okay. So this is your Hall coefficient explanation by Dunn theory, okay. So तो अभी हमने डीसी कनेक्टिविटी तो कर दिया था, ओके, अब एसी कनेक्टिविटी भी करना है हमको, ठीक है। तो कभी किसी किसी एक्सपेरिमेंट में एसी लगाया है क्या मेटल के ऊपर? कभी आपने क्लास में तो नहीं, हैं? तो एक्सपेरिमेंट्स में नहीं कभी जनरली एसी लगा, मेटल्स पे एसी लगाते ही नहीं है, ठीक है। हाँ सर, हमेशा जो एक्सपेरिमेंट होते हैं सॉलिड स्टेट के होते हैं उसमें एसी लगाना है तो आपको डाइलेक्ट्रिक में लगाते हैं, मेटल में जनरली ऐसा एक्सपेरिमेंट है नहीं, ओके, मैंने तो आज तक देखा नहीं इसमें आपको एसी पड़ रही है, अनलेस इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात अलग है, ठीक है, अगर शॉर्ट एम्पलीट्यूड लगाने हैं तो ऐसा, तो अभी मैं एसी इलेक्ट्रिक फील्ड, एसी कंडक्टिविटी की जरूरत क्या पड़ गई है मुझे, ओके। तो जब भी आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी स्टडी करनी होती है, तो जब लाइट पड़ रही है किसी मेटल के ऊपर, ओके, तो लाइट के अंदर क्या होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, समझे, हाँ। सो इफ यू वांट टू डिस्कस, आपने क्या कहा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक बोलते हैं ना, ईएम वेव के अंदर, ईएम वेव्स, यस हाँ। यस। So if you want to discuss the optical properties of metal, okay, then you need this AC conductivity, okay. So put the heading now, क्योंकि हमको बताना है कि लाइट क्यों ऑब्जर्व करती है, किसको रिफ्लेक्ट करती है और किसको ट्रांसमिट करती है, किस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करेगी, किसको रिफ्लेक्ट करेगी, ओके। लाइट्स आर जनरली, मेटल्स आर जनरली शाइनी, दे रिफ्लेक्ट द लाइट्स, ओके। मोस्ट ऑफ द लाइट जो होती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तभी तो शाइनिंग होते हैं उनका सरफेस, ओके। So now the optical reflectivity of metal I have to explain, okay. Other way you can say the optical property of metal. We are going to discuss, okay, some elementary results using this Durant theory, okay. So put the heading now, AC conductivity. So today we'll finish this one, free electron theory. इसमें एग्जाम पे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, थ्योरी समझने के लिए है बस, ओके। एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बैंड थ्योरी से एंड क्वांटम थ्योरी। अभी क्लासिकल थ्योरी चल रही है, व्हेन वील यूज दिस फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स, ओके, देन we'll get some other results, okay, which will explain some of more highlights on these properties, okay. So this is AC conductivity, okay. So I want to calculate AC conductivity. तो हमको हमारे पास जो इक्वेशन है, दो ही चीजें, या तो कनेक्टिविटी का एक्सप्रेशन है या फिर हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, ओके। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, dp dt व्हाट इज ft minus p upon tau, okay. So now this is a oscillating alternating field, okay. So I can write my E, okay, is a function of time. Say this is E naught, which may be function of x e power minus iota omega t, okay. Similarly your momentum will be as a function of time, okay, minus say p naught e minus iota omega t, okay. Now put these values here, okay, and you see what expression you are getting, okay. I want the expression for AC conductivity, okay. I want sigma. AC conductivity क्या होता है, okay. you want B, आपका J क्या होता है, J होता है माइनस आपका NE VD, okay. So if you know, if you can calculate the VD, or you can simply write minus NE PT, this function of time, PT upon M. If you can calculate PT, okay, then you can calculate current density, okay. If you know current density, you know that is sigma equal to E. You can compare both expression and you can calculate the conductivity, okay. This approach I'm going to use here, okay. So first of all put these values here and see what you're getting. So if you put this value here, you get what, minus iota omega p naught, okay. What is the force क्या होगा यहाँ पे, फोर्स यहाँ पे क्या होगा, E into E, okay, okay. So E into E naught, okay, into iota minus E पर minus iota omega t, वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो,
ओके सिमिलरली माइनस पी ओके सो पी को क्या लिख देंगे हम लोग पी नॉट अपॉन टॉ ये क्वेश्चन सही है क्या देखो चेक करो सर मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं ले रहे नहीं मैग्नेटिक अभी तो हम एसी कनेक्टिविटी कर रहे हैं ना हॉल इफेक्ट नहीं कर रहे हैं एसी नहीं कनेक्टिविटी सर जब सर हाँ लाइट तो सर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बहुत होता है हाँ तो अभी हम खाली उसका लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं एसी कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं ठीक है तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड आएगा तब मैक्सवेल इक्वेशन जाके उसको देखेंगे हम क्या हो रहा है ठीक है तो अभी अभी हम पहले हमको खाली पहले तो एसी कनेक्टिविटी का फॉर्मूला चाहिए ना भी हम जब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी तब डिस्कस करेंगे हमको पता है कि एसी कनेक्टिविटी होती क्या है तो अभी यहाँ पर हम वी आर ट्राइंग टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर एसी कनेक्टिविटी उसके बाद हम देंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ओके सो नाउ फ्रॉम हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी नॉट P naught is what? P naught will be what? One upon tau. ft equals to minus e upon e into e naught कैसा है सर कौन सा? ft Ft तो फोर्स है ना इलेक्ट्रिक फोर्स है ना E नॉट E. Ft इज जो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स यही तो होगा बस यहाँ पे फर्क क्या है कि ये टाइम थर्ड इक्वेशन ये टाइम वेरिंग है बस ये टाइम वेरिंग है ओके सो हियर इंस्टेड ऑफ Ft आई एम राइटिंग E into E and E is what E naught E power minus iota omega t और E power iota minus omega t सब में से कैंसिल हो जा रहा है okay so now I got P naught okay so P naught value will be minus E upon E naught okay so this will be tau okay 1 minus iota tau omega this is your P naught okay now I want to calculate this one okay J I can calculate what minus Ne okay P naught e power minus iota omega t upon m okay now P naught का वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा तो इसको माइनस माइनस प्लस n e स्क्वायर tau okay upon m e naught e power minus iota omega t this will become e okay upon 1 minus iota tau omega okay and this is what this is your DC conductivity okay so I can write my J equals to sigma naught E 1 minus iota tau omega into E okay so this J is function of omega okay frequency का function है and this is your conductivity as a function of frequency J omega and this is the electric field function of omega or alternating field okay so now you can write your expression for AC conductivity so the expression for AC conductivity okay AC or you say function of omega that is equal to sigma naught 1 minus iota tau omega this is okay this is your function of AC conductivity का expression है okay so you can write J omega equal to sigma omega E omega okay सर आपने ये क्या लिखा सर कहाँ पे P नॉट सर P नॉट ये P नॉट का नीचे वाला वो सर क्या लिखा 1 माइनस आयोटा tau ओमेगा ओमेगा जो वहीं से निकाला हमने उस इक्वेशन से ठीक है सर हाँ so now this optical property we'll do probably tomorrow or day after tomorrow okay I will try to take one class I already missed so I will take on Saturday or Sunday और आज मैं कल सुबह तक मैं आपको एक असाइनमेंट जो अब तक कर रहा है उसका एक असाइनमेंट भी भेजूंगा अभी आपको ठीक है वो सैटरडे संडे का आपको करके भेजना मुझे okay so I'm stopping here and next class we will finish this within 10 minutes we'll finish this optical property and we will start this quantum theory of metals okay this free electron theory okay using including quantum concepts okay which is called your Sommerfeld theory okay Durant Sommerfeld theory okay so now we'll use some of the things of Sommerfeld and see how things moves okay so I'm stopping here
अभी कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट है नहीं आज की क्लास में? सर ये जे वाला सर, ये राइट हैंड साइड में हाँ एनईए वीडी वीडी होता है ना, कौन सा? ये जे इक्वल्स टू माइनस एनी वीडी होता है। एनी वीडी, हाँ एनी वीडी को वी होता है, वीटी होता है, और वी को क्या ले सकते हो? पी अपॉन टी, पी अपॉन एम नहीं ले सकते हो, पी अपॉन एम, यस सर तो उसी को लिखा है मैंने। ओके सर, फिर एनी एनी स्क्वायर जेड बाई एम, ये पी नॉट का वैल्यू कर दिया, वैल्यू रख दिया उसने, तो एन ये प्लस हो जाएगा, ई यहाँ से आ जाएगा, एन ई स्क्वायर हो जाएगा, टाउ हो जाएगा, ठीक है, ई नॉट आ जाएगा, ये ऑलरेडी है तो ये ई हो जाएगा। ओके यस सर ओके सर, ओके उसके बाद जे को उधर रख के, ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके सो आई एम स्टॉपिंग द क्लास। ओके थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.